since violent clashes broke out in Haryana's Nuh between two communities and left a trail of destruction in the district. The clashes broke out after a mob of miscreants attacked a religious procession by the Vishwa Hindu Parishad yesterday afternoon. The situation on the ground 24 hours later remains grim. Several, including policemen and civilians, have been killed in the violence. 5 deaths have been confirmed so far. 40 people have been injured. Stones were pelted, cars were destroyed by the mob. Even police stations and hospitals were at the receiving end of the rioters' fury. After the clash, state government has ensured heavy security forces deployed in the area to control the situation. Central forces have also been brought in. The police are now on the lookout for the rioters who went on a rampage. Meanwhile, the ML Khattar government has hinted at a larger conspiracy behind the attack by anti-social elements to disrupt peace in the state. Chief Minister Khattar himself said it was an annual yatra and miscreants didn't just target members of the procession but also the police to not just disrupt the yatra but to cause casualties. घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। ये जितना बड़ा बवाल हुआ है, जो कई पॉइंट्स पर हिंसा हुई है, इसका कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है। वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं। What you see on your screens right now are CCTV visuals of the cybercrime police station in Nuh, where miscreants pelted stones at the police station and destroyed the car stationed there. They even managed to allegedly steal police records from inside in order to destroy evidence. They even tried to break the CCTV cameras. Look at yet another CCTV footage that we have in our possession. A mob attacked a hospital and destroyed the chemist shop in the same compound. Let's take a look, in fact, at that image that I'm talking about. This is the one where a car standing outside was vandalized. Attempts were made to destroy the evidence by damaging the CCTV cameras close by. However, as the police are probing the matter, they have denied any involvement of Monu Manesar, because that, remember, was also an angle that was being given. That cow vigilante, Monu Manesar, who is also an accused in the murder of 2 men, Junaid and Nasir, in an earlier episode, that he somehow was responsible for why the violence started. Here is what the police had to say about that. देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगी इंटेलिजेंस फेलियर है। फोर्स की डिप्लॉयमेंट की थी, उसके बाद में परिस्थिति कब किस मोड़ पर कब परिस्थिति एकदम हाथ से निकल जाए, कुछ चीज़ें आप लॉ एंड ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो तैयारी कम थी, ज़्यादा थी, ये एक विश्लेषण का विषय है। इंटेल पे कितना काम हुआ, पूरा सफिशिएंट था, अगेन ये विश्लेषण का विषय है, जिस पे अभी तक कोई विश्लेषण हुआ नहीं है। तो आज कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल है। विभिन्न धाराएं हैं, आगजनी की भी धारा है, राइटिंग हुई है उसकी धाराएं हैं, जो तोड़फोड़ हुई है, हमारे मुलाजिमों को गोली लगी है, डेथ भी है। तो जितनी भी धाराएं इनसे संबंधित लगती हैं, सारी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। Now, the violent clashes have given the opposition fresh ammunition to corner the Khattar government. Many have called it a complete failure of law and order in the state. The opposition also said it was an intelligence failure and the government did not provide adequate force for the annual procession. इन सब के लिए भाजपा जजपा की सरकार जिम्मेवार है। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जिम्मेवार हैं, जो कानून व्यवस्था पर काबू नहीं कर पा रहे या जानबूझकर कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत दी जा रही है। As far as our Home Minister saying that it was pre-planned, that statement itself shows that there is a government failure. दंगे हरियाणा के 6 जिलों में फैले। हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसके पीछे इंजीनियरिंग हुई है। अच्छा, विद साहब कह रहे हैं। खट्टर साहब कानून व्यवस्था को कायम करने में पूरी तरीके से फेल हुए। कानून व्यवस्था का अगर कायम रखा जाता तो पहले पता था कि जुलूस निकलना है।
So who is responsible for trying to vitiate the atmosphere in Haryana? Who is responsible for this pre-planned conspiracy? Joining us on the debate, we have Krishan Kumar Dhull. He is a spokesperson of the BJP in Haryana. Mr. Ajay Gulia, spokesperson of the alliance partner, the Jan Nayak Janata Party or the JJP. Sanjeev Srivastava, senior journalist, and Vivek Bansal, senior leader of the Congress. Let me ask you that question, Mr. Dhull. खट्टर साहब ने बोला कि ये पहले से षड्यंत्र रचा गया है। किसने रचा है ये षड्यंत्र और फिर स्टेट मशीनरी क्या कर रही थी? देखिए, मनोहर जी ने ये कहा कि जिस प्रकार से यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकल रही थी, उसको लेकर के सुरक्षा के जो मानक हैं उनको पूरा किया गया था, मापदंडों को पूरा करके जो पुलिस फोर्स जितनी उस शांतिपूर्ण शोभा यात्रा के लिए चाहिए होती है उतनी सफिशिएंट थी। लेकिन इसके पीछे कुछ षड्यंत्र था जो बाद में यात्रा के दरमियान एकदम से नजर आया। प्री प्लान्ड था ये चीजें, जिससे कि छतों पर पहले से ही पत्थर रखे गए थे, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, सरकारी मशीनरी को तोड़फोड़ की गई, जान माल की हानि की गई और पुलिस के थाने पर अटैक किया गया, बस को किडनैप करके उसको दूसरी जगह ले जाया गया। ये सारी चीजें जो शो करती हैं वो निश्चित तौर पर किसी एक षड्यंत्र की तरफ तो इशारा करती हैं। अब इन सारी चीजों के मद्देनजर जो हमने आसपास के जिले हैं उनमें धारा 144 लगा दी है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से करीब 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पहचान हो गई है, 44 एफआईआर अलग अलग दर्ज कर दी गई हैं। लेकिन ये बड़ा ही निंदनीय है और बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस प्रकार से मेरे साथी राजनीतिक दल इस पर राजनीति सेक रहे हैं, इस प्रकार की अगर पूर्व की घटनाओं का हम जिक्र करेंगे तो अब ये राजनीतिक विषय हो जाएगा और मैं नहीं चाहता करके बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिस्टर बंसल। उनके समय The BJP is saying इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए because one, it's a sensitive matter, two, there was a bigger conspiracy at play. Mr. Bansal. Well, let me say, Padmaja, that what is sauce for the goose is sauce for the gander, and if at all these sort of occurrences take place, which is, I can say that anarchy is in the country at the moment. You take an example of Manipur, what all happened, and you take example of Nuh. This violence had been unabated and on such a large scale, and this is a very oversimplification that it was a conspiracy and this adequate arrangements had been made. What the intelligence had been doing, you see, once you unleash this communal gene, then it's very difficult. It vitiates the entire atmosphere, and that's what had been BJP just to rake in political benefits. They had been vitiating the communal the atmosphere in the country, and it is a byproduct of all this. What had been happening in what we are seeing in the country all around, be it Manipur, who has unleashed the communal gin where it takes place. So who has unleashed the communal gin according to you? Yeah. You are asking me, or you are asking somebody else? Yes, Mr. Bansal, I'm asking you. I would like to say, I would like to say that definitely BJP on every trivial matter, they tend to bring ignite religious feelings and communal frenzy. Just see the utterances of their leaders. How exactly is this the BJP unleashing communal frenzy, Mr. Bansal, when the Vishwa Hindu Parishad's yatra was pelted with stones? Two home guards are dead. They were shot at. So you see that. Who are the people opening fire? Don't you think that it is? No, definitely, if at all. See, let me just say, we are jumping to conclusions. Let the inquiry and everything come out. I don't rule out that is what has happened. But what I mean to say is, when earlier death of Junaid and all had taken in that orgy that had taken place, after that, they did not allow the perpetrators of the crime to be arrested. So Sir, how does actually the arrest has to be done by the Rajasthan police. The FIR against
The FIR against Monu Mane, sir, for the murder of Junaid and Nasir Rajasthan police is was in not Rajasthan. allowed to enter, and Haryana administration was not rendering any assistance to Rajasthan police, and that was one of the reasons. Okay, this let's problem take this kept one on by lingering one. for First, a time, answer and this, the Mr. Ajay Gulia. The Congress is saying that the gin of communalism rather, has been let loose by the BJP and presumably by you because you're in alliance. That is why what happened in Nuh is your responsibility. As I said, that the people of Haryana gave us the authority to run the government, the part of the government in Haryana. I can say that it's Okay, we'll just try and fix your audio, Mr. Gulia. किशन कुमार जी, आप इसका जवाब देंगे कि सांप्रदायिकता का जिन जो है बोतल से भाजपा ने निकाल लिया है, तो ऐसे दंगे हो नहीं है? नहीं, देखिए बंसल जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये बात करेंगे तो पुराने समय में हरियाणा में जो दोहराया गया था, अगर उसकी बात करेंगे, जाति की, रंग भेद की जो ये राजनीति करते रहे हैं, ये तो कांग्रेस का कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार की पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में सरकार है, तो हरियाणा में कम्युनिज्म की बात अभी 9.5 करीब हमारे 9 साल पूरे होने को, तभी हम सांप्रदायिक का जिन निकालेंगे। अगर हमारे को ये करना है तो मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा बंसल जी, कृपया इस प्रकार के जो सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए थे, सांप्रदायिकता की बात करेंगे। ये सांप्रदायिक नहीं है तो सांप्रदायिकता की बात नहीं है तो और क्या है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो हुआ था, जिस प्रकार की घटनाएं मेवात में घटी थी, जहां गोलियां चली थी मेवात में, आप किस बात को भूल जाते हैं? जहां दलितों के साथ वहां पर झज्जर जिले में गोलियां चली थी, कैसे भूल जाएंगे आप? अब आप मुझे ये लगता है कि मैं आपसे भी सांप्रदायिक कम्युनल वायलेंस। बंसल जी, देश बदल रहा है, डेफिनेटली कंट्री इज चेंजिंग, कंट्री इज विटनेसिंग mayhem and carnage in the country. What all has been happening, despite the fact that you may be saying that in Kashmir everything is safe and sound. What is an army officer is killed day in and day out. We come to know that killings take place in Kashmir. Now this thing has started in Haryana as well. So don't wash off your hands. Violence on such a high scale, and it could go unabated. And what the administration had been doing, what the police and all had been doing, just to say that if etiquette arrangements had been made, then no such incident of violence would have taken place. Because let Mr. Dhull respond to this, and I want to bring in Sanjeev Srivastava as well. Mr. Dhull, बताइए, किशन कुमार जी। मेरा बंसल जी से अनुरोध है, सांप्रदायिकता की बात अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो राजनीतिक इतिहास है ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो देश की आजादी के बाद जितने सांप्रदायिक दंगे हुए वो कांग्रेस की सरकारें रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर लोगों को सरेआम काटा गया, कत्ल किया गया, तो उस वक्त की तत्कालीन सरकारों को भारत के इतिहास ने देखा है। तो किस प्रकार के बंसल जी आप बात करते हैं? ओके, अभी कौन से आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं? पता करते हैं कि वहां पर हिंसा कल क्यों फैली है? संजीव श्रीवास्तव, is this a failing purely on part of the state, which it is, because they did not clearly have adequate deployment? But what about the people who actually opened fire? How is it that people were prepared with arms, with weapons, with stones to be pelted at the gathering? So, Padmaja, there is no way anybody can defend or not condemn what happened in Nuh and in the Mewat region. And it has also been seen in the last few years that Mewat, certain areas of Mewat have actually become some kind of hotbed of anti-social and criminal elements. Having said that, I would also really like to add that just focusing your attention on Nuh incident would be really missing out the woods for the trees. What we sow, we reap. Look at the condition through the country. Have we had a debate on this police man killing target killing of 3 Muslims in a moving train, and if the senior tries to stop him, he kills him as well? And this is the kind of hate which has now been perpetuated.
You said in sir, your how intro, do you know? who is Sir, vitiating the atmosphere? I'm sorry. I'll have to interrupt you for just a second. So you are calling it a targeted killing of Muslims. Okay, sorry. The police Sorry. has not said it. Complete. I would request you to please not make statements and call it a targeted killing of Muslims alone. He has killed a senior. He has killed 3 passengers who were also Muslims. Even the remand note today does not attribute motives and call it targeted killing. Yes. This is a very, very serious statement you're making. Okay. Yes. So it was accidental killing. Okay. Accidental killing of people who happen to be Muslims. No, it wasn't an accidental killing. He killed passengers who were present. But also, sir, so far we know that he was mentally disturbed and 6 months he has been taking mental evaluation / therapy. So I just want to put that out there. Yes. So this kind of mental illness is becoming very common. When a Monu Panesar is celebrated, a known Gunda anti-social element rogue, no action is being taken against it. Why is there intelligence failure in this case? Because administration police has lost the confidence of a particular section of the community of our country. Sorry. Who is celebrating Monu Panesar? Let me say what I want to say. If you keep interrupting, then you can... Everybody, the entire right-wing gang, the entire so-called ultra-nationalists, Hindus, it's, Padmaja, what is happening is before all of us. Half of the debates... Not to say that I have any sympathy / brief for Monu Panesar, but sir, also to boil this down to Monu Panesar would be to miss the woods for the trees. Monu Panesar surely is no excuse for anyone to start firing shots at the police. You're not suggesting that because Monu Panesar is not arrested, people should open fire at a yatra. Madam Padmaja, you are speaking more than me. So you can continue. But Padmaja, if you want the panelists to speak, if you keep interrupting and say more than what I want to say, it's not possible. You are keeping the lid boiling. You are keeping temperatures high. I am not. I am only scrupulously I am saying across facts. the country 2 days back. I am saying. Will you allow me to say? Will you allow me to speak, madam? Go on. You go ahead. You conduct the program. If you don't allow me to speak, 2 days back, a police officer in UP was transferred just because he acted strong against a group of some VHP or Kamadiya rally because they were disturbing law and order. A message has gone across that certain groups will be overlooked when they break law, certain groups will be punished with extra zeal. And that is creating a kind of frustration. We are sitting on a powder keg. Such kind of incidents will happen more often, unfortunately. Half of the Noida channels do one-sided debates in the evening. So this is all who is vitiating the atmosphere. We all know who is vitiating the atmosphere. Okay, again, this is a generic statement. I do not have the brief for all Noida channels or any Noida channel, barring my own. So we can only speak for ourselves. Okay, right. That being said, I again would want to scrupulously stick I am not blaming you. To what I know. What I know so far is that the police, even while producing this man, did not confirm that this was a targeted attack. 1, 4 people were killed, out of which 1 was Tikaram Meena, who is the sub-inspector and who was the senior of this man, Chetan Kumar. And he wasn't definitely a Muslim. But answer this, Mr. Gulia. The example given by Sanjay Srivastava, उन्होंने बताया कि ठीक है चलिए आप हरियाणा में कह रहे हैं कि ये कंस्पिरेसी हो गई। उत्तर प्रदेश में कुछ कावड़ियों ने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की, पुलिस वाले ने एक्ट किया, उसको आपने तबादला कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे माहौल क्रिएट कर रही है जिससे उन्माद होता है, जैसे उत्तर प्रदेश वैसे हरियाणा। एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे, पूरे देश में हिंदू मुसलमान बना के रखेंगे। I'm talking about the atmosphere only, Mr. Srivastava. Mr. Gulia of the JJP will answer. आपने उन्माद फैलाया है गुलिया जी, जिससे ये घटनाएं हो रही हैं। नहीं, पद्मजा, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपके टीवी चैनल पे अगर कोई इस प्रकार की सोच रखता है कि वो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष से है, तो इस बात की दलील लेकर के उसके ऊपर कोई रियायत की जाएगी। हरियाणा प्रदेश की सरकार लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा,
इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वो किसी धर्म विशेष से या किसी जाति विशेष से है, कानून की दृष्टि में सब बराबर है. And one more thing I would like to say, like Congress is making a statement that there were not adequate arrangements. If arrangements were not sufficient, it would never be possible to evacuate the people. इतने बड़े उन्माद के बीच में जब लोग इतनी पत्थरबाजी और गोलियां चला रहे थे, जब गोलियां और इसके बीच में से जो यात्री थे, इस यात्रा के लिए उनको पुलिस ने सेफली उनको वहां से निकाल करके और सेफ जगह पर पहुंचाया. अगर पुलिस के इंतजाम पुख्ता नहीं होते, अगर पुलिस के इंतजाम पर्याप्त नहीं होते, तो क्या इस प्रकार से हजारों लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया जा सकता था? उनके बिना उनके जान माल का नुकसान हुए. सरकार की तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए गए थे. हाँ, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि कमी कहां पर रही, कितनी नहीं, ये जांच के बाद निकल करके सामने आएगा. कमी क्या थी वो तो बाद की बात है. अभी आपके ऊपर इल्जाम है कि माहौल कौन खराब कर रहा है. नहीं, इस प्रकार के लोग जो कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये माहौल में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से स्पष्ट बात है कि कोई किसी धर्म विशेष हो, जाति श्रीवास्तव साहब भी कांग्रेस में गए, ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट. Why you are imputing motives to an statement made by anybody, and to once you are on the dock, you don't have to accept your mistakes. धार्मिक उन्माद कहलाने के लिए तो आप ये ना सोचे कि वो किसी धर्म विशेष से है, इसलिए उनको कोई छूट मिलेगी. किसी को कोई छूट मिलने वाली नहीं है. लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. कानून की नजर में सब बराबर है. पुलिस अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा. सरकार की तरफ से कड़े निर्देश हैं. कोई किसी धर्म विशेष से, जाति विशेष से हो, इस बात पर ध्यान न रखते हुए जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए. सब अपना काम करेंगे. Sanjeev Srivastava, what do you make of this explanation? Law is equal for all. Law will take its course. पद्मजा जी, एक सेकंड आपके पास आ रही हूँ. Krishan Kumar ji, let Mr. Well, that's the way it should be. That is the way it should be. That's the way it should be, and I hope the government lives true its word. I don't see the issue is we have to go deeper into the issue. Then you'll see you're making a generic statement. It's the whole country which is going through this phase. That we have made so much of Hindu, Muslim in everything that we have lost the plot. And till we correct it, and till our leaders, senior leaders, till statesmen of the society, till the media decides to play a positive part, we are heading for not good times. That's the only thing I would like to say. Krishan Kumar and ji, we all know it, whether we say it or not. we are sitting on a powder keg, क्योंकि हर चीज में हिंदू मुस्लिम होता है. ये नफरत का नतीजा है. One should also talk about, we should also talk about the mosque being burned. पद्मजा जी, मेरा ये कहना है, together with what we are talking about. ये एक बार इन सज्जन जी को शांत कराएं प्लीज. एक बार मैं बड़ी विनम्रता के साथ सबको सुन रहा हूं. मेरा ये कहना है कि किसी प्रकार की अगर धार्मिक उन्माद की भावनाओं को रखते हुए आज ये दंगा भड़क रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार की इस मनोवृत्ति के साथ वो शासन करती, तो 9 वर्ष के शासनकाल में हरियाणा में ये पहली ऐसी अप्रिय घटना हुई है जिसमें हमारे 5 साथियों का हरियाणा के लोगों की मृत्यु हुई. Sir, that is hardly a reason to say that this is the first time there was a failing, so this is an excuse for what has happened, because clearly there was a failing of, if not intelligence, then at least in response on the part of the Haryana government and the Haryana police. But who are the people who are behind the attack to begin with must be identified, must be arrested. Thanks very much, all gentlemen, for joining me.